Hi everyone. Okay, so later half in the day, matlab around 11 or 10:30, we received a notification saying कि CUET PG 2025 portal is live, up and running for registration, and all the possible details are available for the students to know related to CUET PG 2025. ठीक है, so it's a pretty late turnaround. मतलब considering the official notification जो है आपका, it itself says 2nd of January, right? So ideally notification should have been released a bit early, at least maybe afternoon or evening tak, but it was quite delayed. But still no one expected it कि the notification or the invitation to application will be available from today itself, which is 2nd of January. However, काफी सारी चीजें हैं कि why it is being it is available for you to apply right on time, क्योंकि not much information has been shared with context to the pattern of the examination. ठीक है, so जिस reason से feedback and all लिए गए थे, the detailed version is yet not available, which means कि अभी के लिए they have opened up the application for all the students from 2nd of January itself. Okay, so first of all, step by step. Okay, so this is your CUET PG 2025 पोर्टल जहां पे यू हैव रिसीव्ड योर नोटिफिकेशन. ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे, द फर्स्ट लिंक सेज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CUET PG 2025. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस पे सिंपली क्लिक करना है, देन यू विल बी मूव टू दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिस, पब्लिक नोटिस dated 2nd of January 2025. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल डिस्कस वेरी क्विकली, एंड लेटर हाफ maybe tomorrow or later on we'll discuss in detail about the pattern whenever it's available. Okay, so first thing first, key online submission of application which starts from today itself, exactly 1 month that we discussed in the last session. Full 1 month का window आपका मिलता है to complete your application, right? So from 2nd January to 1st of Feb 2025, right? Then you have correction windows. That is something we can leave. Now, another important point is the date of examination. ठीक है, now that applications open हो चुके हैं, so considering the timeline of application still remains the same, more or less. खाली एक हफ्ते का गैप है from last year, which was 26th of December. Now it is 2nd of December. अब वो कैसे कर पाए इसको? That the reason is कि डिटेल्ड वर्जन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ब्रोशर वो डिटेल में अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स दे स्टिल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दैट ब्रोशर, क्योंकि वो डिटेल ब्रोशर और बुलेटिन बनेगा आप सबने जो फीडबैक दिया है उसके बेसिस पे. सो ऑन दैट दे कैन कंज्यूम टाइम, लेकिन उन्होंने मीन वाइल एप्लीकेशन ओपन कर दिया है सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन एटलीस्ट स्टार्ट विथ फिलिंग अप द फॉर्म. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रीजन क्या रहा कि ऑल ऑफ अ सडन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया, व्हेन ऑल ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट देयर विल बी अ डिले ऑफ 7 to 10 days. ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी अवेलेबल नहीं है, which still might take at least a week's time. अगर वो genuinely सारे feedbacks को consider कर रहे हैं and they will implement. ठीक है, so अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करोगे which has started, date of examination another important point. ठीक है, so again जितना डिले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में है, ऑलमोस्ट सेम डिले आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन में है. इनफैक्ट उतना भी नहीं है, मोर और लेस आई गेस 1 or 2 डे का ही डिफरेंस है. लास्ट ईयर इट स्टार्टेड एट अराउंड 11th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th or 11th March. This year starting from 13th of March. तो वहां पे भी देर इज द मार्जिन इज वेरी लेस. ठीक है, सो दे आर फॉलोइंग द एग्जैक्ट टाइम लाइन एंड देर आर नो सच डिलेज एज सच. ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, वो अपना आ जाएगा. दैट डजंट हैम्पर योर प्रिपरेशन. तो वो बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहे हैं. मीनवाइल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो कि मार्च में ही मेरा एग्जाम है, बिकॉज दे आर नॉट ऑल्सो टेकिंग
the window of examination beyond 31st of March. मतलब they will wrap up all the papers, टोटल जितने भी सब्जेक्ट के पेपर्स हैं बाय 31st of March. तो अगर आप बहुत लकी हुए तो ज्यादा से ज्यादा आपका फॉर एग्जांपल इको माइट कम अपॉन 31st of March. ठीक है. सो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो विच यू कैन think of, but in any way it will be, all the papers will be wrapped up by 31st of March. So कोई भी हिंट नहीं है अप्रैल का whatsoever, because उन्होंने काफी ड्यूली और काफी क्विकली सारी चीजें की हुई हैं, और जिस वजह से डिले आना चाहिए था, दैट हैजंट हैम्पर्ड देयर एंटायर प्रोसेस, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज स्टिल नॉट देयर. सो अगर इफ दे आर वर्किंग ऑन द बैकग्राउंड, यू माइट हैव इट दिस वीक. आई डोंट थिंक दिस वीक, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक वो आ जाना चाहिए, डिटेल्ड वर्जन, राइट. So, दो important point, which is the application date of examination. Uh, Apart from that, ऐसा कोई major date नहीं है. Of course, the last date and the first date. इसमें extension होंगे, वो हमें पता है, आपको पता है, but let's try to make sure कि we fill the application form as soon as possible. Okay, cool. Now, important pointers. ठीक है. पहली बात, total of 157 subjects are being offered in CUT PG 2025. Okay. अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही बेसिक रहेगी, जनरल रहेगी. यहाँ कोई आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, राइट, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन. जो वो खुद कह रहे हैं, दैट विल बी रिलीज्ड सून. ओके. जैसे आपको यहाँ पे नोटिस का, पब्लिक नोटिस के सेक्शन के अंडर आपको पब्लिक ये नोटिफिकेशन मिला है, सिमिलरली आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी यहीं पे डिस्प्ले होगा. फॉर दैट वी विल हैव टू वेट. ओके. क्विकली, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. दो एनेक्स्चर्स हैं. पहला एनेक्स्चर जो है वो है कोर्सेज के बारे में, विच आर रफली अराउंड 157 कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड. एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ सिटीज है. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ सिटीज, अराउंड हाउ मेनी ऑफ देम आर, 312 cities आर देयर. ठीक है. तो एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, नथिंग टू मच टू गो थ्रू इट. लास्ट में बचता है आपका ये डॉक्यूमेंट विच सेज 312 cities including 27 cities outside India. Cool. पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन. हाँ, जो चीज उन्होंने कंफर्म किया है, दैट ऑनलाइन मोड ओनली, देयर आर नो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एज सच, only one application by a candidate. Okay, no second candidate will be allowed to fill more than. Okay, so you can't fill more than one application. This is pretty basic, right? Okay, now there's nothing as such uh, which is outside the purview of a basic document or a notice. ठीक है. उन्होंने बस इसलिए इस नोटिस को इशू किया है, सो दैट all the entire process is right on track. It is starting on time. It is wrapping up on time. और कोई भी डिले नहीं है फॉर वट एवर रीजन. द रीजन लाइक कि पैटर्न चेंज होगा. ऑफ कोर्स अगर वो उसे चेंज करेंगे, सो दे विल मेंशन इन द बुलेटिन. देयर इज नथिंग दैट विल हैम्पर योर एप्लीकेशन. तो उन्होंने वो सारी चीजें बैकड्रॉप में रखी हुई हैं. एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन कर दिया. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस. And the number of courses you have, the date of exam, sorry, window of exam, application form, right? So that is it. Exactly my point. Which institutions like JNU, IGTR and all, right? So there is nothing, they're not giving away too much of information to you. ठीक है. अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा. उसमें यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, all that information will be shared subsequently. For now, you just fill the form as soon as possible. ठीक है. एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आप अभी फॉर्म फिल करने जाओगे एप्लीकेशन, तो वहां पे यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में आएंगी. ठीक है. अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं एज ऑफ नाउ, दैट रिमेन्स टू बी सीन. क्या वो सारी की सारी जो पिछले साल थी, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टिंग, विच विल बी द केस फॉर श्योर, आई एम अज्यूमिंग. ठीक है. और कोई नई यूनिवर्सिटीज उसमें एंटर करती हैं कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन.
Also, before you start filling up your forms, of course, there at times what happens कि एक दो हफ्ते बाद कुछ universities CUT को join करती हैं, right? So there is option that you can edit and add those universities later on as well. So that is something you can keep in mind. Baki, let's see. Let's wait for the information bulletin, and we'll also see how many universities as of now are part of CUET and in particularly offering CUET PG, are taking admission into their Masters in Economics through CUET PG Economics 2025. Lastly, paper code, paper code, paper code. Okay. So this year also the paper code for economics remains the same, which is COQP 10. 24 से पहले in 2023 the code was different. ठीक है, 2024 में it came COQP 10, 2025 maybe it is the same, so they will go with the same paper codes for almost, I guess, for other subjects as well. ठीक है, so this is your paper code. That's it. Okay. Okay, so now the application is available. All of you can start filling up the forms as soon as possible. In case you have any doubt, just feel free to connect with us and we'll be happy to guide you. And that's it from this session. And as and when any update comes up, we will definitely discuss. And make sure आप सब जो भी अपने respective courses भर रहे हो, just double check, cross check your respective paper codes. Okay. Thank you so much, guys.